Hi guys, welcome back to Matter Spotlight. Today we have Nikhil and Swapnil with us. Yo. खोज एक और Guys, ये आंसर खोज रहे हैं. I have to say that I can claim this that BHH में हाँ कर दे artist hip hop debut for fact for a fact 9/11 निखिल स्वप्निल ने किया है with कल्कि कलयुग. If you haven't heard it yet, You you are missing out in life. nobody is harder, no Nobody. other song is harder, Nobody. nothing. मैं फैन नहीं हूँ उसके लिए, हमारे पास मोमेंट बना देंगे. यार सो सबसे पहले तो हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि NSFW में नॉट सेफ फॉर वर्क कुछ भी नहीं है. आप घर पे भी सुनो, काम पे भी सुनो, गाड़ी में भी सुनो, जहाँ पर भी सुनना है सुनो. पर उसका मतलब यही है कि Nikhil Swapnil free word. it is basically a wordplay of Nikhil Swapnil and our मतलब I never thought that I'll probably make a song with somebody like asking that Yeah. जिसने प्रीतम के साथ गाना बना रखा है. So सीधे मौत सीधे मौत सीधे मौत सीधे मौत सीधे मौत सीधे मौत सीधे मौत. पंजाब उस एल्बम आर्ट में हमारे आगे के कुछ रिलीजेस छुपे हुए हैं. आप लोग ढूंढ के बताना कौन से नहीं मिलेंगे, वो शायद रिलीज होने के बाद आपको समझ में आए अगर आप फिर से देखो. Yeah. Hi guys, welcome back to Matter Spotlight. Today we have Nikhil and Swapnil with us. Yo. So let's start the interview. Any new releases coming up? बहुत सारे. So we had an EP already out. We have an EP already that is out now. कौन सी? NSFW. हाँ. It is Yeah, we'll upload it now Yes, itself. yes. Yes. है ना? So- And then it'll reach you. Yeah. Yeah. So Yes. that's what's up, and we have another project. We'll talk about it Okay. eventually. ठीक है. How was it launching your previous songs that came out with Matter? With Madverse, Yeah. yeah, it was the smoothest process ever. So how was और- it working with the label Yeah. as well? It's fun, yeah. It's honestly like for us, it wasn't that much involvement through the label process of it. We were involved with the artist, and like we made the songs together, and everything was fun. And then the deal came through, and we went through about it. It was nice. How was it creating Khoj? Oh, Khoj. खोज खोज एक और Guys, ये आंसर खोज रहे हैं. खोज यार खोज बना था 2023 में एज अ डेमो. वेरी रैंडमली मेड सम रैंडम एस लिरिक्स के साथ, जो कि मुझे लग रहा था कि रैंडम एस है, बट बाद में सब लोगों ने अप्रिशिएट किया उस चीज़ को. सब आपके अप्रिशिएट की वजह से ही है सब कुछ. बिना आपके अप्रिशिएट की वजह से कुछ है ही नहीं. But not to mention उसमें आदित्य कलवे भी Yes. है. He sung the song Yes. and he's written the second verse of it Yes. as well. And we were like we had the first verse and the chorus down and then we were like यार अब करना क्या है? How वो do we बहुत go टाइम about तक it? ऐसे ही बस हमारे बैंक में पड़ा हुआ था, एंड वी वर नॉट प्लानिंग टू पुट इट आउट आल्सो. Yeah. So आप लोगों के जो और सारे गाने हैं वो इतने स्लो एंड सैड वैसी वाइब है, बट कलयुग एंड काल्की हाउ डिड दैट कम? इंट्रूसिव थॉट्स. Intrusive thought. Oh. इंट्रूसिव थॉट्स. यार वो बस बिस्तर कुछ तो तोड़ने का मन करता है ना कि कुछ सामने दिखा बस ऐसे पटक दो उसको. Like खत्म कर दो. sonically speaking, those are our very intrusive thoughts that we wanted to just like. Once we wanted to just be there and be like, यार ये हम करना चाहते हैं, पागल होना चाहते हैं. But to be like given all due credit वाली चीज. गीतांश जो कैमरे के पीछे खड़े होकर कॉफी पी रहा है. That man right there. भाई, Take I have to say that I can claim this that BHH में हाँ कर दे. hardest hip hop debut. For fact. For a fact 9/11 निखिल स्वप्निल ने किया है with कल्कि कलयुग. If you Facts. haven't heard it yet, You should. you are missing out in life. Nobody is harder. No Nobody. other song is harder. Nobody. Nothing. No. This universe is as heavy as Kalyug का last drop. भाई I Guys, अगर ये इसके सब बाद भी you're फुकार not है. convinced, कि कल्कि कलयुग तो फिर सुनना रुक चाहिए जाओ. आपको, तो आप लोग घर जाओ. जाओ अपने घर. वहीं पे हो पे तो फिर वहीं जाके सुन लो. मतलब अगर नहीं कर रहे हो सुन लो यार. सुनो यार प्लीज. कल्कि कलयुग सुनो. बहुत heavy गाना है. वो बहुत हैवी गाना है. It talks about so much real shit that is happening and it is hard. Just go ahead and listen to it.
It's very experimental. हाँ, मुझे Honestly, लगा हम लोग जब कि उसको like- बना रहे थे, it wasn't like कि हमें उसको hard या heavy वैसे कुछ करना है. हाँ. Because in like Kalki तो is very experimental in itself. It has 3 different beats Yes, Yeah. which is, sonically. And Kalyug में ऐसा है कि Kalyug starts out like in the middle of it gets very like cinematic and honestly, if I had to say, Kalki and Kalyug actually encapsulate a lot of our influences into Yes. one thing because it has metal. It's one way of it, Yeah, I think it it's has really- hip hop. It has all of it. Like it really gets your actual personalities out in the track. pretty Yeah. much, yeah. Yeah. I mean, we've also made Baja, so it's there's a that. little and मतलब I own up to the song as much. Yes. So yeah, it's like duality है वो दोनों Exactly. spectrum पे Baja चीजें और हैं. वो खोज Yeah. soft songs. So yeah. By duality of an artist in general, Why there not? exists a lot of duality. So I feel like कि Kalki Kalyug is also us and Vaja is also us. What is one of your favorite fan moment that you guys had? या weirdest? Fan moment. भाई फैन नहीं है उसके लिए हमारे पास मोमेंट बना फैन मोमेंट हाँ यार एक बहुत वियर्ड फैन मोमेंट है जो बहुत रिकरिंग ड्रीम जैसा है वी होप टू सॉल्व इट नाउ विद दिस बिकॉज बहुत बारी हमें जैसे हमने पैंथर भाई के साथ हमने काम किया था वी रिलीज FTTC टुगेदर लॉट ऑफ सॉन्ग्स वर डन बाय अस सो उसके बाद a lot of people started approaching us like on DMs and stuff and कभी कभी कोई मिल लेता from DHS because मतलब काफी लोगों ने सुना था and Parinda was one of the songs that blew up from that album so हमें बहुत इंटरेक्शंस ऐसे हुए हैं बड़ों के साथ बच्चों के साथ रैंडम लोगों के साथ कि इसको फ़ोन आता है या मुझे फ़ोन आता है या कोई मुझे रैंडमली रोड पे मिलता है और बोलता है आप निखिल स्वप्ने लो ना आप ही के गाने हमने सुने वो परिंदा आपका गाना है ना बहुत बहुत बढ़िया वो हम बोलते हैं हाँ मैं ही निखिल स्वप्ने लूँ मैं ही। दोनों हम दोनों मैं भी निखिल स्वप्ने लूँ ये भी निखिल स्वप्ने ले भाई यस बोथ ऑफ अस Yeah. अब आप गेस कर लो स्वप्निल हमारा सरनेम है भाई हम दोनों का नाम निखिल है और हम दोनों का सरनेम भी स्वप्निल है तो ये हमारा नाम है Nice. Yes. ये हमारा होता है क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि निखिल स्पेस डैश स्पेस स्वप्निल मुझे दो नहीं लोग लगा हैं। था to be honest क्या कि निखिल स्वप्निल एक इंसान है यार ये कैसे हो सकता है गीतांश क्योंकि you don't have anything in between ना We have a space and a dash and a space again. Yeah, surnames don't have that. Like But it's okay. see, Nikhil space dash space. भाई गाने सुन रहे हैं ना हाँ, मैं तो कोई तब बात- सही है भाई हाँ चलेगा भाई गाने सुनो भाई तुम हाँ, शक्लें वो शक्लें दीवार दिख है जाएंगी निखिल शक्लें दिख जाएंगी शक्लें में एडवर्स दिखा देगा भाई ये true क्यों नहीं तो tell us about your new releases थोड़ा सा कि the songs that you just came out with what is your inspiration behind it या what's your objective behind it यार सो सबसे पहले तो हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि NSFW में नॉट सेफ फॉर वर्क कुछ भी नहीं है आप घर पे भी सुनो काम पे भी सुनो गाड़ी में भी सुनो जहाँ मर्जी सुनना सुनो पर उसका मतलब यही है कि Nikhil Swapnil Free World. It is basically a word play of Nikhil Swapnil and our partners and company Free World. Yeah, Free World is like a collective that we've built. We've started working on it for a while now. Yes. And it's a collective of different creatives, like visually, Musically, music, etc., all of etc. those things. We are also getting into films now. Yeah. Slowly, सारी अलग-अलग avenues build करें. We also tried with the bunch of like fashion and stuff, but वो भी for the later half. Yes. So that's a collective that we are working on, and Gitansh is a part of it. Parth is a part of it. Gitansh So is is the it. like for the EP is the same thing. So Gitansh and his name is by the way 911. But we artist like name. to call him Yeah. Ixi. Ixi, like IX/XI. Oh, Yeah, the Roman interesting. numerals. Why so? Yeah. 'Cause- You answer. Why am I answering for your name? Because My birthday is September. oh nice So it his is a very joke is a- controversial date Yeah, as yeah. well Rappers do this thing, no? Rappers can pull it off. Yeah. हाँ. So he's there featured on that EP. Parth is there featured on that EP. And yeah, it's like we're boys. Like हम लोगों ने Yeah, college it's a साथ full निकाला boys है. project, So it's a home project. we used to live together also. Before like when we were in Bombay, when we were in college. and that we used was to live very together. NSFW. So who do you plan to collaborate with next? Oh. यार सच में बताऊं So many तो people. आई हैव बीन वेरी वेरी ब्लेस्ड कि जो भी हम लोगों ने सोचा है जिन लोगों के साथ कोलैबोरेट करने के लिए इट हैज बीन पॉसिबल कहीं ना कहीं से वो आ गए हैं, वो लीड्स आ गए हैं. लाइक वी वांटेड टू वर्क विद स्क्वायर MC Square फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड Yeah. दैट्स We're हैपनिंग releasing an EP Yes. now with Warner. इट्स ऑलरेडी आउट बाय द टाइम Yeah, you're yeah, seeing yeah. this so Yeah, it's called I'm Not a Rapper. yes Yeah.
Interesting. So Yes. yeah, all And- 4 songs are done by us. We've co-composed and he's written all of those. He's performed those. Yes. And we have 2 features on the track as well. And must hai, So yaar. Like, it's a good. luckily we have been like blessed enough to have like a lot of the people that we wanted to work with are working with us. And honestly like अब मैंने ये सोचना छोड़ दिया है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा. It's just like कि people keep like the weirdest thing. Like I have obviously grown up a lot of on Bollywood music, right? And I'm sure you guys remember that song like from Bodyguard, I love you, right? And like last month we spoke to Ash King. Yeah. Oh. I was in And- Sweden, bro, and like we Yeah. had a video call. मैं And अपनी it was family के the साथ गया हुआ funniest था. video call. Like we're all just chilling in the video call. We were supposed to meet very formally. We Yeah. couldn't meet, and we did a video call, and we started playing his. We started to play our songs to him, Yeah. and he fucked with them a lot, and he really liked them a lot. Oh wow. And we just figuring out now new songs to Yeah. make with him. So we're gonna release some that's stuff with very. him as well. मतलब I never thought that I'll probably make a song with somebody like Ash King that Yeah. जिसने प्रीतम के साथ गाना बना रखा है. Yeah. So सीधे मौत, सीधे मौत, सीधे मौत, सीधे मौत, सीधे मौत, सीधे मौत, सीधे मौत. Of course, bro. Like, come on. That's one. Tell us Yeah. about your album cover. Banjao Naka. बंजावना का शूट is actually. यहाँ दिखा देना बड़ा सा क्योंकि मैं जो अभी बोलने वाला हूँ ना वो Yeah. उसके रेफरेंस के लिए चाहिए. बंजावना का उस एल्बम आर्ट में हमारे आगे के कुछ रिलीजेस छुपे हुए छुपे हैं. हुए आप लोग हैं. ढूंढ के बताना कौन से नहीं हैं. मिलेंगे. वो शायद रिलीज होने के बाद आपको समझ में आए. अगर आप फिर से देखो. Yeah. पर We just shot this while we were shooting Shooting for Vajah. the Vajah. Yeah. Yeah. So we shot this. We had done like a simple in-house shoot. Yeah. Kashish Kakkar shout out. Yeah, Ashi Kakkar Ashi shout Kakkar out. shout out. These boys हम लोगों ने साथ में ही Vajah shoot किया है. These guys have been with us since the first song that we released independently. आई नहीं. Yeah. उन्होंने हमारे साथ shoot किया था. They did the entire thing. Like hats off to those guys. एंड कुरुक्षेत्र में रैप वहाँ पे हम लोगों ने शूट किया था. तो वहाँ पे वी शॉट दिस एट देयर स्टूडियो एंड देन वी वर लाइक लेट्स मेक इट एन एल्बम आर्ट व्हाई नॉट कि शक्लें डालते हैं यार क्या होगा. तो उसमें फिर हमने पीछे लिरिक्स भी डाले हैं. देयर इज अ बंच ऑफ द अनरिलीज्ड सॉन्ग्स दैट आर आल्सो देयर. Guys, you need to go and spot it and comment on the reel. Please do. Which one is it? I'd love to see you try. Okay. So, what have you guys thought of for future? Like right now, you are in Delhi. He's in Bombay. So how do you? We've shifted to Noida by the way. Oh, both of you. Yeah, we have a studio now in Noida. We're Oh. living there as well. Nice. Yeah, we shifted early this year. Yeah. Nice. So future, honestly, like the near future that I see happening is like our project that we've been working on for the last year. It's called Panchali. It's going to be out soon, and it is going Massive. to be massive. It's going a to be great. behemoth of a project, bhai. Yeah, Like, yeah, like the amount of work we have spent, like amount of time we've spent working on the audio side of things is nothing compared to how much we have scaled up on the On the visual video, side of yeah. things. Wow. Because we are actually making an album film out of it, and it's going to be like So a proper 20 minutes- film. 20 minutes of songs It has a and then prologue. like- It has a ending. All of those things. Yeah, like yeah. Proper story, 4 characters. power. So who Yeah. did the shoot for you guys? So That man right Gitansh organized the entire thing with Parth. These boys are like obviously family, Yeah. and we've been working. हम in सब spirit कॉलेज मेट्स हैं यार. together. सो वी लाइक स्टेड टुगेदर. हम लोग लाइक जब से फर्स्ट ईयर हुआ उसके बाद से वी Yeah. डिसाइडेड कि वी नीड टू शिफ्ट इन टुगेदर एंड लाइक वर्क. And we always And, wanted to yeah. do something like of a bigger project with just the 4 of us involved in the core of it. Yeah. And then we involved some few more people like the director is AVC. Aditya Vikram Chavla. Yeah. Very nice director, and भाई the है यार DOP. अपना. हाँ भाई है यार. सब भाई तो है. these are all in house जितने भी people like लोग from हैं. Whistling Woods and around and Yes. मतलब सब लोग हम लोग ने सब साथ में ही वो सब सारी चीजें Yeah. सारे लोगों को पूछ के कि कौन कर सकता है कैसे कर सकता है what ideas are clicking. It's shot Then we by figured like our this, yeah. very dear friend Aditya Aditya. Bhushan. Too many Best Adityas boy. in this project. Yes, too many Adityas. but Okay, best let's boy. do a rapid fire round. Okay. It'll be fun. So a किसको song. आंसर करना लेकिन? Yes. हाँ क्या? नहीं मतलब इसको या मुझको? The both. अच्छा. यार ठीक है. बट फिर वो अच्छा वो हो जाएगा ना? हाँ. Acha, ठीक है. I'll ask you TT खराब first. करा वो, हाँ. Then you answer. ठीक Okay. है. A song that instantly gives you the perfect vibes for your inspiration, but it's not your song. Currently, Pancake by Sidhuman. Pancake. I just like that, bro. I just Damn. like it, bro. What's the harm? I really like it. Song that inspires you. मैं आजकल सुन रहा हूँ.
चार्ली पूथ्स वॉइस नोट्स ऐसे पुराने भी बता सकते थे क्या? मुझे लगा यार सिर्फ अभी जो रिसेंटली अच्छा इन टोटलिटी वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। Charlie यार, Puth is. Charlie Puth, are you seeing what he's doing now? I think No, I don't I'm not think sure so. if he's going independent or not. No, it's Warner. So he's done this entire like 80s vibe का पूरा एक album that he's going to be releasing now, and उसने पूरी website बनाई है and it's Oh, like wow. crazy. He's marketing it really well. He's made another page for just his album and he's putting stuff out there and उसमें कुछ कर रहा है. He's mad genius है भाई वो बंदा. पागल है. One day I just need to meet him, bro. Like legit, bro, and thank him for voice notes. What a fucking album. What a fucking album. Charlie Puth, reach out. चार्ली भाई कम ऑन, Come to Madverse यार. कम ऑन, what the hell यार? मालवीय नगर. Dream collab. ड्रीम कोलैब, जाकिर जी. वो तो छोड़, जाकिर जी यार. But वैसे करण औजला, करण और Anushla. come on, Nice. I would love to. Favorite track to perform live? देखो. Oh, favorite track to perform live? We haven't performed it yet, but there are songs from the EP that I would want to perform. Which ones? It's not out yet, so I can just You talk can about name it. them Yeah. still. I would love to personally play I Am Home. Yeah. It's my victory lap song. So what do you think the audience reaction would be from that? Oh, they'll go crazy. They'll go crazy. So our idea is not to do it the hip hop way where you are just on stage with maybe two guys or one DJ and like just Never, थोड़ा सा never. empty stage essentially. Never. We're not those. We are from the band era. Like हम लोग को पूरा वो extensive setup चाहिए with the dancers, with the backing vocals, everything like pyros and shit and like proper band setup. उससे ना वो लाइव का एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाता है यार. The energy that you get from people is different when you're That's performing it true. live with Yeah. instruments. Because everybody locks in into the music and performs it live. That is Yep. something else. Yep, No yep. backing tracks, nothing like that. Like, No backing tracks. Live. Maybe done. some stems. Maybe some stems. But Ideally I play would, them. yeah, I would exactly. I would not want any stems in an ideal live scenario. Yeah. Like there's a band called Dream Theater, right? Okay. And they used to like play this tour back in like 2012, and they used to like take the entire 60-piece orchestra with them. 68? Yes, Yeah. and they used to make them sit right next And that's to a, them. like a prog metal band. Yes. So like heavy drums और वैसा सब कुछ Yes. चल रहा है और उसमें पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा रहा है साथ में. So personally, Mad. I would love that if someday Nice. Berlin Orchestra, please collaborate. Please. One of the release songs में अगर मेरे को कुछ perform करना है तो कलियुग is one. Kalyug also, yeah. Kalyug is Yeah, massive really of a Yeah. track and it will create that energy. Kalki and Kalyug both perform And like it's a one after the hard other. ass song. Yeah, like, वो पूरा मतलब it's like हिला a देगा कि वो. one song if you have one slot to perform for like 5-6 minutes 10 हाँ. minutes ish then you perform Yeah. that one song And and चले you're जाओ. done like आपको खत्म कुछ हो बोलना ही तुम. नहीं उसके बाद. हाँ वो फिर वो आगे के लोगों को देखने दो. हाँ. Okay, क्या है? last question. Finish the sentence. We know the song did well when. Then it had reels on it. यार Okay. it did well when What does well mean? Define well. Like numbers well Numbers. or like Numbers well. it's like a validation you get no कि Oh, अच्छा validation ये well. receive हो गया मतलब लोगों Oh, से. okay. Yeah. यार मेरे को याद है like a very old friend from my school called me up हाँ. and उसने मेरे को बोला कि भाई like वो नहीं सुनता था generally मेरे गाने और उसको नहीं पता था मैं म्यूजिक बना रहा हूँ generally Oh. and उसने मुझे कॉल अप किया randomly and he said कि भाई ये जो तूने गाना निकाला था आई थिंक उस बजा भाई उसको बहुत पसंद आया एंड मतलब ही जस्ट लाइक टॉक टू मी अबाउट इट लाइक फॉर 15 मिनट्स कि भाई ये इतना अच्छा कैसे है वगैरह वगैरह आई अप्रिशिएट दैट मेरे पास दो इंसिडेंसेस हैं. एक इंसिडेंस तो ये है कि यार लॉन्ग लॉस्ट पीपल दैट यू हैव इन योर लाइफ स्टार्ट कमिंग बैक एंड जस्ट रैंडमली पीपल हु हैव लाइक चेंज्ड कंट्रीज years ago and languages and shit like that and they are like coming into my DMs and being like bro do you remember me and I love your song Baja or some song and then it's like a very good like तुम nostalgia में चले जाते हो तुम उससे फिर पूरा सब कुछ बात करते हो कि क्या कैसा था क्या था and then you know It's catch like up and reliving stuff an old yeah. memory. So Yes. one of those like happened for what was that song called? It's a old song that I had made पहले. So उसमें before Naked Summer Days. So उस time पे ठीक है भाई. आया हुआ था. But a fun incident that I remember is so we released a song called Rajula Malu Shai जो हमारा गाना release हुआ था with Priyanka Meher. She sung it. Very lovely song. It's a very ethnic पहाड़ी song proper Yeah. वैसे. So उस song के time पे we were actually in Delhi
This is before we shifted to Delhi. Yeah. And We were there for FTDC launch FTDC party. की लॉन्च पार्टी के लिए हम लोग दिल्ली में आए हुए थे उस टाइम पे एंड विद पैंथर द प्रोजेक्ट दैट वी डिड विद पैंथर एंड उस टाइम पे हमारे पास हार्डली एनी सेटअप था, एक लैपटॉप था, एक SSD थी, एक हेडफोन्स थे, एंड दैट वाज इट एंड वी वर सपोज्ड टू डिलीवर दिस वो सॉन्ग भी multimedia very headphones. yeah very क्विकली वी वर सपोज्ड टू डिलीवर द सॉन्ग सो वी दो डिड इट दिन एंटायरली पहले डेडलाइन थी जब हमें गाना मिला उसके। एंटायरली उसको लैपटॉप में बनाया, उतने से स्पेस में बनाया एंड देन वंस इट गॉट रिलीज्ड आई वॉज स्टिल एट हिज प्लेस एंड रैंडमली मैं ऐसे सो रहा हूँ और मैं ऐसे उठता हूँ, फिर सुबह सुबह ऐसे देखता हूँ कि गाना बज रहा है हॉल में, ठीक है, मैं देखता हूँ अंकल इसके My डैड dad बैठे was हुए playing it. हैं, अंकल बैठ के वो गाना बम्प कर रहे हैं भाई लूप पे, फिर उन्होंने अपने दोस्त को बुला लिया भाई घर पे, उनको भी सुना रहे हैं भाई कि अंकल बोल रहे हैं ये वाला बढ़िया था, ये तुम ऐसे गाने बनाया करो तुम। उस दिन आई रियलाइज कि हाँ यार दिस कुछ इज तो हम लोग जीत रहे हैं भाई, अब कुछ थोड़ा तो सही हम कर लिया, थोड़ा कुछ कि डैड से वो मिल गया इन्हें। Validation from parents is like That maximum. is, yeah. But my dad loves my music, so What is one last advice in 3 words that you can give someone else? Advice? Yeah, for Are other we artists. qualified? Do you think we're qualified to Yeah, give yeah, advice? of course. पहले तू दे दे। एक वर्ड दे दे, एक काम करते हैं। मैं Release! अच्छा मैं गिटार रिलीज How did that नहीं make करूँगा। sense? It doesn't make sense. 3 words तो थोड़ा छोटा है, but थोड़ा अब उसको ज़्यादा 5 Okay. देते हैं। release music quicker. 3 words. Nice. Yeah. Through my words. Make better music. How? Always. Yeah, how? नहीं मतलब don't compare yourself to any other person. Just compare yourself to what you did, and then try to make it better than what you did. किसी भी quality sense में. Be it the I recording think even or if it's whatever. sometimes even if it's not up to the quality at par with what you have in your head, it's just better to release it anyway. It's okay. Yeah. Release it. It's better out there than in your own phone or Yes. folders. We've realized this the hard way. एक दूसरे A lot को of बोलते हैं songs. बातें हम। हाँ, a lot of songs upcoming obviously now and also released, but हाँ वो मेजर फीलिंग वही रहती थी पहले भी कि यार निकाला नहीं है एंड देन दे गेट स्टेल, दे यू लूज आउट ऑफ दोस आइडियाज अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड यू Yeah. लाइक कि ठीक है यार उसको जाने एक्चुअली पता है क्या, गाने का ना इंटरेस्ट जो तुम्हारा बनाते टाइम और उसके एक पीरियड के आसपास होता है, वो 2 साल बाद डिमिनिश होना इज नेचुरल, क्योंकि यार तुमने कितना भी अच्छा गाना बनाया हो 2 साल पहले, अगर वो रिलीज नहीं हुआ है हाँ। तो यू आर क्रिटिकल अबाउट इट। जैसे Yeah. वही You जाता है even मतलब keep thinking कि यार मे what बी द if I टेक did? कुड बी बेटर, मे बी द मिक्स कुड बी बेटर, मे बी व्हाटएवर। वो क्रिटिकलिटी का वो एंड पॉइंट होता है कि कहाँ पे तुम क्रिटिक छोड़ देते हो। देना चाहिए कई बार ना, लाइक Yeah. जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट सो मच एंड जस्ट डू इट। Yeah. Real. That's a very good advice, guys, and you should really follow it. So, Follow how us did you also. guys like the interview? What are your बहुत thoughts? मजा आया। मस्त। हमारा तो समझ में पहला है, आया। this is our first. Yes, this is our first Yeah. interview as Nikhil Swapnil together. Yeah. We are also musicians, by the way, not just stupid people on camera. So check our music out also. Yes. Yeah. Spotify, Nikhil Swapnil, Apple Music, Nikhil Swapnil, wherever you wanna, YouTube, Nikhil Swapnil. All released by Madverse, by the way. All our songs Yes. are now Madverse up on Madverse. exclusive. Yeah. Exclusively released by Exclusively. I got all भाई आपने जब पहला आई थिंक वजह रिलीज किया था, क्या रिलीज किया था, उसके बाद मेरे को इतना पसंद आ गया मैडवर्स, ये मेरे को बोलता हमने कि कल भाई की release किया था। हाँ कल की आई थिंक उसी टाइम, आई डोंट नो एग्जैक्टली कब किया था, बट ही January. टोल्ड मी कि यार अब सारे गाने ना उठा के Madverse मैडवर्स से पे डालो, एक जगह पे सब कलेक्ट होने दो भाई, See, ये सब guys? मत करो। It This is, is what it is, happens. and this Yeah. is not paid promotion. We No, are I not swear getting it's paid. not. We are trying to. We are trying to get paid promotion, but honestly, like in all reality, भाई अगर तुमने एक बार ही मैडवर्स का इंटरफेस UI ट्राई कर लिया है टू अपलोड अ सॉन्ग, you cannot go anywhere else, क्योंकि it is as simple as putting up a photo on the Yeah. internet. And a lot of like Right. new fun features like Yeah. you guys have, Yes. like the Express ads and ads. stuff and Yeah. pre-saves और वो सब भी, and AI artwork ये सब भी मैं देख Oh, रहा था, उसमें yeah. कुछ कुछ चीजें The AI and then mask. yeah, you have your App. own, you खुली नहीं, खुल गई मैडवर्स ऐप में Art. Stats दिखा दो भाई। स्टैट्स नहीं दिखाते। बट या तो मैं एक्चुअली इसका बहुत टाइम से वेट कर रहा था यार ऐप का, Yes, बिकॉज वी यूज्ड टू same. चेक, मतलब मेरे को कुछ भी चेक या करना Safari होता पे था जाके फोन वो पे, करके तो वो अपना फोन पे करना खुलता ही होता नहीं था यार पहले, तो अब वो खुल रहा है, अब अच्छा लग रहा है कि कम से कम फोन पे भी खुल जाता है। यू गाइस आल्सो हैव दैट एंटायर प्रेस वाला एक वो सेक्शन है ना तुम्हारे पास, एक व्हाट्स दैट मार्केटिंग में एक वो जिसमें आर्टिकल भी लिंक करना होता है और ये भी, और वो एक 2-3 नो या दैट थिंग आई ट्राइड
Did I try that? No, I tried the other one out. Ah. They got us placed also. Madras got us placed. Oh, yeah. Yeah. They do. For Wajah also, I think. Yeah, they do. And we increasingly got better playlists, honestly. Like Banjana was. Is it us or is it Madras? I think it's a mix. it's both. Bro. नहीं यार Madras for Can't- sure. But they have been really helpful. Very Yes. like सब लोग ने बहुत अच्छे से मतलब भाई लाइक contact मैंने रखा है, अपने सब कुछ किसी हुआ है. भी क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेटिव से 2024 से पहले बात नहीं की थी. मुझे पता भी नहीं था वो लोग दिखते कैसे हैं क्योंकि कोई बात करता नहीं था. Yeah. अब मैं उनके ऑफिस में बैठा हूँ. ये क्या है भाई And बढ़िया a lot of like those issues that I used to face with distribution and my like concerns that I had, I got a lot of them cleared by talking to you guys. Like Yeah. हम लोगों ने बहुत time spend किया लोगों के साथ and then we spoke to them and realized किया कि हाँ like a lot of things are now being solved by these independent distributors and it's like बहुत सही है यार वो. Yep. Make it easy for a person to release music. I mean, that's and what we it's- tried. Yeah, that's the best way you can be a distributor. Make it easy for them. Yep. फोन पे डाल दिया भाई crazy कर दिया भाई crazy. So, great interview, guys. हो गया? हाँ? मिला नहीं यार. Watch out for Panchali. Coming out soon. If you don't watch out for Panchali, you are mad. NSFW also coming out soon. NSFW though is out now. Go stream it. But watch out for Panchali. If you don't watch out for if you don't watch out for Panchali, आप ऑरेंज खा लोगे. हाँ? क्या खाया तूने अभी? Ice. अच्छा आइस. तो आप if you don't watch out for Panchali, you will eat ice.